Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School. Here class 4th and today our subject is English. Okay. Now in our previous video I taught a very beautiful poem that is related to wake up. The poem was all about wake up, and here one another story related to wake up, that is unit number 1, Neha's alarm clock. In this story, here one girl Neha who does not like to wake up early in the morning. Okay, so let's see. Before explanation of the story, we have to learn introduction part first. So here it's the introduction of the story. Neha's alarm clock is a story about a girl whose alarm always rings at 6 every morning. She wakes up early to go to school. Here one girl Neha who does not like to wake up early in the morning. यहाँ पे जो गर्ल नेहा है उसको सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं है. And she have to wake up early in the morning because she have to go to school. Even if she stops her alarm, the creeping sound of the birds will wake her up. She is lazy to do her routine activities such as bathing, brushing, getting ready to school. Neha is too lazy to do her regular activities, to do her regular routine such as, for example, bathing, brushing, getting ready to school. ओके सो नेहा को ये अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और अगर नेहा अपना अलार्म क्लॉक स्टॉप कर लेती है तो क्रीपिंग बर्ड्स है वो उसको उठा देते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टोरी, इट्स नेहाज अलार्म क्लॉक. ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द चैप्टर. Narrator says, ring ring ring, of goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up, and she mutters to herself. Here you can see a picture. Neha is sleeping with her toys and books, and at that time the alarm goes ringing. It's a ring ring ring, and ring ring ring, it's a voice of alarm clock. Every day Neha's alarm clock ringing at 6 o'clock, but Neha doesn't want to get up too early, so she covering her ears so she can't hear alarm's voice. यहाँ पे जब नेहा सो रही होती है तब अलार्म क्लॉक रिंग होता है, एंड नेहा को अभी इतना जल्दी उठना नहीं है. सो शी मेक्स अ फेस, शी मेक्स अ अनहैप्पी फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स. वो अपने ईयर्स को पिलो से ढक लेती है ताकि उसको अलार्म क्लॉक की आवाज़ सुनाई ना दे. बट एट द टाइम शी नोज एट द एंड शी हैव टू वेक अप एंड गो टू स्कूल. नेहा सेज, this alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's too unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometime. Now Neha said that to herself. Every day this alarm clock pulls me out. It means forcefully wake up. This alarm clock is forcefully wake up. It's too unfair. So she had a wish, काश I sleep little longer in the morning. She said, काश ये अलार्म क्लॉक कभी उसकी जॉब भूल जाए. It means the alarm clock can't ringing in the morning, in the early morning. नेहा यहाँ पे बोल रही है कि ये अलार्म क्लॉक है वो एवरीडे 6 o'clock रिंग होके मुझे जल्दी अपने बेड से उठा लेता है. इट्स टू अनफेयर. काश मेरी भी ये विश है कि मैं मॉर्निंग में थोड़ा और ज़्यादा सो पाती. एंड आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम. काश ये अलार्म क्लॉक उसकी जॉब है वो भूल जाए. इट मीन्स वो मॉर्निंग में इतना जल्दी ना बजे. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, narrator says,
something falls. Neha smiles. Now narrator says there is some voice to something fallen in the ground. मतलब कुछ गिरने की आवाज़ आती है. And Neha knows. She smiled. And Neha को पता है क्या गिरा. So she smiled. Now Neha says, oh, my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late. Now Neha is very happy. Why? Because her alarm clock fallen and broken. So she thought that tomorrow she can sleep late in the morning. Narrator says, next morning there is no alarm. So Neha sleeps and sleeps. The small creepy birds wishes which come to the windows every morning find Neha still sleeping. Now narrator says that next day alarm clock is fallen, alarm clock is broken, so alarm clock can't ringing in the morning, so Neha can sleeps and sleep. But there is some small creepy birds which comes to window and recognize Neha is still sleeping. यहाँ पर नरेटर हमें बता रहा है कि अभी तो नेक्स्ट मॉर्निंग में अलार्म था ही नहीं बिकॉज अलार्म इज़ ब्रोकन. सो नेहा बहुत देर तक सोती रहती है एंड द स्मॉल क्रीपी बर्ड्स वो आए उसकी विंडो पे और बर्ड्स ने रिकॉग्नाइज किया नेहा इज स्टिल स्लीपिंग. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. Bird says, wake up dear, wake up fast. What is all bird says to Neha? Wake up dear, wake up fast. And narrator says, Neha gets up with a start. Now Neha says, Neha is wake up with an angry face. She does not want to get up. But what can she do? Because she have to get up and get ready for the school. Now Neha says, oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? Now Neha says, oh no, if there is no alarm clock तो टूट गया है. But I thought I would sleep late in the morning, but these birds wake me up. लेकिन आज ये बर्ड है जिसने मुझको उठा दिया. Why don't they leave me alone? ये birds मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं. ठीक है. Now narrator says, even this wish of Neha's comes true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. Now narrator says us that नेहा दिस विश कम्स ट्रू. नेहा की ये विश भी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट डे देर इज़ नो अलार्म क्लॉक, नॉट अ सिंगल बर्ड, बट समवन एल्स हु डज नॉट वांट टू नेहा टू मिस हर स्कूल बस. कैन यू गेस व्हाट इज? Guess what is? It is a wonderful and big bright sun. You can see here the picture of big bright sun. Sun spread sunshine and light to the Neha's room with a warm smile. यहाँ पे जो सन है वो नहीं चाहता था कि नेहा अपनी स्कूल बस मिस करे. सो बिग ब्राइट सन था, उसने नेहा की जो रूम थी वो एक वार्म स्माइल से भर दी. इट मीन्स उसकी लाइट पूरे रूम में स्प्रेड कर दी. Now Neha says, oh my eyes, now it's the sun waking me up. Why can't he let me be? It means Neha says, Neha is very angry. He said the sun waking me up. ये सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते. फर्स्ट अलार्म क्लॉक, सेकेंड क्रीपी बर्ड्स एंड नाउ इट्स अ सन हु इज waking me. So Neha is very angry. Narrator says, even this wish of Neha's comes true. Next morning the sun is behind the clouds. So Neha snores till she hears her mother's voice. Now narrator ये बोल रहे हैं नेहा की ये विश भी कंप्लीट हो गई. Neha's this wish also comes true. In the next day sun hid himself behind the clouds. सन ने अपने आप को क्लाउड के पीछे छुपा दिया है. सो नेहा snores and snores. नेहा सोती रहती है till she hears her mother's
वॉइस मतलब नेहा तब तक सोती है जब तक उसको अपनी मम्मी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है. Now mother says, wake up sleepyhead, you will miss the bus. Now mother said to Neha, wake up dear, wake up fast, otherwise you will miss your school bus. मदर नेहा को बता रहे हैं कि wake up dear, otherwise you will miss your school bus. Now Neha said, oh no, why does mother have to wake up? Now नेहा बता रही है कि मदर मुझे क्यों उठाया, आपने मुझे क्यों उठाया. Narrator, there is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happened the next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to mother. Now narrator says that अब कोई चांस ही नहीं था. नेहा have to gets up and dress up and gets ready for school. Now tell me, can you imagine what will happen in next day? अभी आज क्या हुआ, मदर ने उसको उठाया, बट अभी दूसरे दिन कौन नेहा को उठाएगा. क्या आप इमेजिन कर सकते हो व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा. हियर यू कैन सी अ पिक्चर. नेहा इज वेक अप एट 6 o'clock. नेहा वेक्स अप विद द स्टार्ट. नेहा को किसी ने नहीं उठाया, बट शी वेक्स अप एट 6 o'clock. और उसने अपनी घड़ी में देखा तो मॉर्निंग के 6 o'clock हुए थे. शी कॉल्स आउट टू mother. So Neha calls her mother and asks. What she asked? Neha says, माँ वो वॉक मी अप टुडे. नेहा अपनी मम्मी को बताती है, पूछती है कि माँ वो वॉक मी अप टुडे, आज मुझे किसने उठाया. Narrator says, mother smiled. नेहा के यह क्वेश्चन से उसकी मम्मा स्माइल करने लगी. Neha's mother is smiling. Now mother says, वो as you of course. मदर बोलती है किसी ने तुम्हें नहीं उठाया. यू ऑफ कोर्स यू वेक अप बाय योर सेल्फ ओनली. नेहा की मम्मा बताती है कि किसी ने नहीं उठाया. यू वेक अप बाय योर सेल्फ. नाउ नेहा सेज बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई. नाउ नेहा सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड टू हिज मदर, हाउ इट इज़ पॉसिबल, आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई वेक अप माई सेल्फ ओनली. नेहा बताती है कि मम्मा मैं तो सो रही थी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपने आप को ही कैसे उठा सकती हूँ. नाउ मदर सेज, नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon. नेहा की मदर उसको ट्राई कर रही है. मदर इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन. नेहा इस चाइल्ड बताओ मुझे तुम अपना लंच एवरी डे आफ्टरनून में ही क्यों लेते हो. नेहा सेज, आई फील हंग्री. नेहा बता रही है कि आई फील हंग्री, सो दैट्स वाई आई टेक माई लंच एट द आफ्टरनून इन एवरी डे. एंड मदर सेज, वाई डू यू स्लीप एट 9 every night. नाउ मदर इज आस्किंग अनदर क्वेश्चन. नाउ टेल मी, बताओ मुझे तुम रात को 9 o'clock को ही क्यों सो जाते हो. वाई डू यू स्लीप एट 9 every night. Now Neha says, because I feel sleepy. Now Neha said, because I feel very sleepy and tired, so I sleep at night. Now mother explaining, there is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. Now mother says, same this type of situation, you take your lunch at afternoon because you feel hungry. You sleep at 9 every night because you feel sleepy. Now so there is a clock inside you which tell you when you wake up. अभी मम्मा यहाँ पे नेहा को एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे आपको पता है कि आपको कब खाना है, आपको कब सोना है. सो देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू. लेकिन आपके अंदर एक ऐसी क्लॉक है जो आपको ये बताती है कि आपको कब उठना है. ठीक है. Now Neha, oh, I better rush now. I don't want to miss the school bus. Now Neha said, oh, अब मुझे जल्दी निकलना चाहिए. It's better to rush now, otherwise I will miss my school bus. Okay. So mother, relax. Today is Sunday. Now mother is explaining to the Neha, you don't have to rush now because relax. Because today is Sunday and today is fun day. You don't have to go school now. Okay, understood? I hope you understand the story.
Okay, Neha's alarm clock. It's a very interesting story. ठीक है. Now moving forward, new word with its meaning. Here we have some new words and that's meaning. Okay, first word is snuggles. Its meaning is that to be in a comfortable position. Its meaning is that to be in a comfortable position. Second word mutters. Its meaning is that say something in a very low voice. Muttered उसका meaning है say something in a very low voice. And third one is windowsill. Its meaning the bottom part of the window. Here you can see a picture of windowsill. There's a bottom part of the window. It's called a windowsill. And relax. Its meaning is free from tension. मतलब कोई जात का tension ही नहीं है. It's called a relaxed situation. And hungry. There's a picture of hungry. Neha is looking a hungry. Feeling or showing the need of food. मतलब जब हम खाने की ज़रूरत होती है we feel hungry. And smile. Amused facial expression. Its meaning is that amused facial expression means happy facial expression. When we smile, जब हम happy होते हैं तो smile करते हैं, तो it's a one kind of facial expression. And sleepy means needing or ready to sleep. Okay, needing or ready to sleep. Now moving forward, question number 1, tick the correct answer. Okay, here it's exercise number 1, question number 1, tick the correct answer. So our first question is, what time did Neha's clock ring every morning? नेहा की जो अलार्म है वो मॉर्निंग में कितने बजे रिंग करती है? तो इट्स ऑप्शन 4 o'clock, 9 o'clock और 6 o'clock. Everybody knows the answer. Neha's alarm clock is ringing at 6 o'clock. So answer should be C, 6 o'clock. Okay. Moving forward to the second question. What did the bird say? What did the bird say to Neha? So the bird says, wake up. Option A, sleep on. B, wake up. And C, go and play at the same time. So right answer is wake up. What is inside you that makes you get every day? आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको बताता है कि आपको कब उठना है, कब wake up करना है? So answer should be our body clock. Okay. Now moving forward. Here question number 2. Who said to whom? Here you can write your own sentences also, but sentences are who said and to whom. Here first one, wake up dear, wake up fast. Okay. Tell me this sentence is bird said and to whom? नेहा. ये सेंटेंस जो है वो बर्ड्स बोल रहे हैं और नेहा को बता रहे हैं कि wake up dear, wake up fast. Second sentence, माँ वो walk me up today. ये कौन बोल रहा है? माँ वो walk me up today. ये सेंटेंस जो है नेहा अपनी मम्मी को बता रही है. तो who said? नेहा said and to whom? her mother. Okay. Third one is, why do you sleep at 9 every night? Why do you sleep at 9 every night? ये सेंटेंस कौन किसको बता रहा है? तो दिस सेंटेंस इज स्पीक बाय मदर एंड किसको बता रहा है? नेहा को. ओके, अंडरस्टूड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू डू activity. You have to write in this. Listen to your sound. Listen to the sounds when you are on your way to school. Discuss with your friends the sound that you heard. List them here. Here you have to write in this sound you heard, and another side you have to write that sound by your friends. Okay. So here it's a table, sound you hear and sound your friend hear. आपको यहाँ पे करना है, जब आप स्कूल में जा रहे हो और रास्ते में जब मॉर्निंग में sound you hear means आप जो सुन रहे हो वो लिखना है, and the other side you have to write sound that hear your by your friends, जो आपके friends को सुनाई देता है. When you and your friend walking to the road, so it is not possible to listening both are the same.
because listening capacity of both you are different from one another. So at the same time you and your friend are listening different sound on the road. Okay, so here some examples of sound that you hear and sound that your friends hear. You can write your own sentences too. Okay, let's read it. Here its example of the sentences are: first is sound of traffic on road. You can hear sound of traffic on the road, and other side sound of conversation with friends, एंड योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड दूसरी चीज़ सुनेगा. आप सुन रहे हो कि रोड पे जो ट्रैफिक है वो आपको सुनाई देता है, एंड दूसरी साइड साउंड ऑफ कन्वर्सेशन विथ फ्रेंड्स. इट्स मीनिंग आपके फ्रेंड को, जो दूसरे फ्रेंड्स स्कूल की ओर जा रहे हैं, वो जो बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो सुनाई देगा. ठीक है. एंड द अदर थिंग एट द सेम टाइम साउंड ऑफ टॉकिंग. आप ये सुन रहे हो कि स्कूल के जाने के टाइम पर जो दूसरे पर्सन है जो हियर एंड देयर वॉकिंग कर रहे हैं, उसका टॉकिंग मतलब जो बातचीत है उसका आवाज़ सुनाई देगा. एंड एट द सेम टाइम साउंड्स ऑफ शटर्स ऑफ शॉप ओपनिंग, मतलब मॉर्निंग का टाइम है तो सारा शॉप ओपनिंग का भी टाइम है, सो बहुत सारे लोग शॉप ओपन कर रहे हैं अपनी. सो एट द सेम टाइम जब आपको टॉकिंग की आवाज़ सुनाई देती है, टॉकिंग का साउंड सुनाई देता है, तो एट द सेम टाइम आपके फ्रेंड को शटर ओपनिंग का साउंड सुनाई देता है. नाउ साउंड ऑफ कूल विंड. मॉर्निंग है तो विंड भी कैसा होगा, एकदम कूल. सो यू हियर साउंड ऑफ कूल विंड. एंड साउंड ऑफ न्यूज़पेपर्स बॉय. न्यूज़पेपर भी हमारे घर पे मॉर्निंग में आता है, सो रास्ते में जो न्यूज़पेपर्स बॉय है उसका भी आवाज़ सुनाई देगा. क्रीपिंग्स ऑफ बर्ड. मॉर्निंग में बर्ड्स आर क्रीपिंग, सो यू हियर क्रीपिंग्स ऑफ बर्ड्स. एंड योर फ्रेंड मी हियर्स मिल्कमैन वॉइस. और आपके फ्रेंड को मिल्कमैन की वॉइस सुनाई देगी. नाउ दूसरी सिचुएशन है हॉर्न ऑफ रिक्शा, मतलब आपको रिक्शा के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी. एंड योर फ्रेंड हियर रेडियो. ओके, सो यू कैन राइट योर ओन सेंटेंसेस हियर टू. दैट्स एग्जाम्पल फॉर यू. ओके, अंडरस्टूड. And moving forward, here it's time to do some grammar. Okay, now filling the blanks. Here the blanks is related to was and were. Okay, in a singular, if the noun is singular, mean one name or one person, so we can use was. And if the noun is plural, it means more than one person or more than one thing, so we can use were here. Okay, so let's do the explanation and let's do the fill-ups. Here A, Ram dash a good football player. His Ram is a singular, so we can use here was. So answer should be was. Ram was a good football player. Okay, second is the cows dash grazing in the field. Here noun is it's a cows. Here too many cows, so we can use were. So answer should be were. The cows were grazing in the field. Now C1, my toys dash broken. Here that's not a one toy but it's a too many toys. It's a plural, so we can use here were. Okay, my toys were broken. Now D, her frock dash too long. Here it's a one frock, so we can use was. Her frock was too long. Another sentence, the market dash closed. So here answer is was, because one market is here, it's a singular noun, so the market was closed. Okay, D1, the children dash happy. Here it's not a one child but it's a too many children, and children's is a plural, so we can use here were. The children's were happy. And D1 is the flowers dash kept in a vase. Its meaning is that there is not a one flower, it's a too many flower, and it's a plural noun, so we can use were. Okay, I hope you understand this was and were filling the blanks. Okay, so here you can read it and learn it properly. Okay, so your homework is you have to learn and you have to recite and you have to reading practice at your home. You have to write down question and answer at your home, and you have to write all the reading practice at your home. Okay, thank you.